हाँ भाई। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. Shall we start, sir? I will just introduce before starting. Ready? Okay.
Good afternoon to all participants. On behalf of the Academy, I welcome you all to day 24 of the Appendix 3 session. The topic for the day is non-trading account. To take you through the topic, we are privileged to have Sri G. Vijay Kumar, faculty, IRIFM. Good afternoon, sir, and welcome to the session. Now over to you, sir. Thank you. Can I share the PPT? Good afternoon, everyone. Welcome to the session which I did last week. Now I'm continuing with it. Okay. Someone wanted me to explain in Hindi also. हम try करेंगे हिंदी में. The chapter is English. So पता नहीं how much I can do justice, but still we'll try. Last class आप लोग सब accounts for not for profit organization is also called non-trading organizations. Income from. So अपने introduction दिया आपको. What is capital expenditure? What is revenue expenditure? I discussed. ये important है आप लोगों के लिए. Without this, you will not be able to do the problem very clearly. तो आपको capital expenditure क्या होता है, revenue expenditure क्या होता है, मैं last class में दिया. Which are of recurring nature उनको बोलेंगे revenue expenditure. Which are non-recurring, once in a lifetime, once in a year जो assets खरीदेंगे उसको capital expenditure हम बोलेंगे. तो what is the difference between capital expenditure, revenue expenditure? आपको मालूम रहना. Benefit of capital expenditure for more than 1 year within one accounting year. That is a basic difference. Generally, capital expenditure is non-recurring and this is recurring. ये 2-3 point आपको याद रहे तो will be, I mean, we should be in a position to understand. Then we'll do the problem. Anything else you want, you can chat, send me the message in the chat. I'll take care. Then उसके बाद होगा capital expenditure, deferred revenue की जरूरत नहीं, important. Then ये donations के लिए भी आपको मालूम रहना. There are two types of basically general donations and specific. General is of उसमें दो होंगे. One is large and one is small. अगर large amount, depending upon the problem, you have to decide which is a large and which is small. Large amount to be capitalized will come in the liability side of the balance sheet. Small will be taken to the income. Specific donation जो भी है, could it be small or big, 1 rupee or 10 rupees, everything will be taken to the liability side of the balance sheet. So this is the basic difference. Legacy हमने बताया आपको, life membership, entrance fees. Someone asked me about endowment fund last week में कोई पूछा. An endowment fund is a kind of investment fund that is held by a non-profit organization, and amounts are withdrawn frequently from the fund in order to meet general as well as specific needs. The fund consists of the number of investments made as well as income earned on such investment. ये होगा. हमने आपको preparation of receipts and payments के लिए भी बोले, and we did receipts and payments. This is a pro forma of the receipts and payments. It starts with opening balance of cash in hand, cash at bank, all the incomes what you receive, money coming in, money going out, even if it is 1 rupee or 1 lakh, paisa aa raha, paisa ja raha will be recorded, whether it is a revenue nature or a capital nature, whether this year amount or अगर last year का हो तो current year का या next year जो भी है वो receipt में आ जाएगा, and payment भी जो भी है, अब पैसा आ रहा पैसा जा रहा will be recorded. That is very important. Point about the receipts and payments. जो भी आ रहा जो भी जा रहा रिकॉर्ड हो जाएंगे. That is receipts and payments. एक एग्जांपल हमने किया था. Opening bank balance, opening cash balance will come on the receipt side. Subscriptions you receive, entrance fees you receive. Someone has asked me, legacies is
not of a revenue nature. Please remember, revenue legacies क्या होता? Legacy is an amount received by an organization as per the will of a person is called legacy. It is non-recurring. Legacy ऐसा होता कि कोई छोड़ के नहीं चले जाता every day. It is once in a blue moon. कभी तो भी होता. It is non-recurring nature and to be treated as capital income and shown on the liability side of the balance sheet. Please remember. Someone asked me, if still any doubt is there in my question and answer session, I will clarify it. Please remember, it is of capital nature and it will come on the liability side of the balance sheet. Then receipts and payments हमने बताया. Please remember. So in the receipts and payments, money coming in, money going out will be recorded. Whether it is current year or last year or next year. Year का मतलब नहीं. Nature of the transaction also is not bothered. Money coming in, money going out will be recorded. Receipts and payment. It is similar to cash book in the trading, trading concerns. So ये होगा whatever I've done. 2 balance brought down, opening cash and bank, 2 entrance fees, 2 sale of old pads, 2 life membership, 2 tournament fund, 2 subscription. From the receipts for all the payments जो भी हम पे करें, salaries पे करें, rent पे करें, furniture खरीदे, cricket bats and balls खरीदे, electricity charges पे करें, postage पे करें, wages पे करें, printing and stationery, tournament, जो भी बच गया from the receipts from the payments you minus whatever is carried on is a closing cash. अगर आपको cash and bank का balance भी अगर होना चाहिए, he will give you one balance, the remaining will be the balancing figure will be that. इधर कुछ भी नहीं दिया करके the entire amount we have taken as cash in hand. अभी देखो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट will come on the payment side. It starts with a credit balance. Bank overdraft is a credit balance. It will start by balance brought down and cash balance will start with to balance brought down. Abhi in this problem you can see all of your subscription received for the year 14, 15. We are doing for 13. We are doing for the year ended 15. Means we are doing 14 and 15. So 14 and 15 we take it 15, 13, 14 भी लेंगे 15, 16 भी आ जाएगा receipt side. Year will not be considered. While doing the income and expenditure, importance आएगा. In the receipts and payments, money coming in, money going out will be recorded. Whether it is 14, 15 or 13, 14 or 15, 16, everything will be recorded on the receipt side. Donations आ रहा है तो receipt side है. Lockers rent आ रहा है receipt side. Investments purchased, हमने purchase किया तो payment side. Sale of gross, when you are selling, money is coming तो receipt होगा. Salaries and wages हम pay करेंगे payment है. Rent and taxes पे कर रहे हैं payment side. Office expenses पे कर रहे हैं payment side. Entrance fees we receive it receipt side. Interest on deposits आ रहा है receipt side. Printing and stationery payment side. Tournament expenditure payment side. Purchase of sports material payment side. Furniture purchased payment side. Closing bank balance. इधर देखो bank balance दिया तो remaining will be the cash balance. हमने किया देखो bank balance दिया तो balancing figure will be the cash balance. So this is how it will come. All balance, subscription 13, 14, 14, 15, 15, 16 will write donation, receipts, all this. I hope this should be clear for you all. So फिर closing bank balance will become next month opening balance. हमने ये last week में थोड़ा किया तो I'm just again revising. अभी देखो ये from the foreign prepare again receipts है. Cash in hand बोलता तो 2 balance brought down cash in hand. Cash at bank बोले तो 2 balance brought down लिखे cash in hand so much, cash at bank so much on the receipt side. Investments purchased, we are purchasing तो पैसा जा रहा है तो payment side में आएगा. Subscription received, including 5,000 of next financial year बोला. Next including 5,000 रहने दो, next year रहने दो, coming year जो भी है. Oh, thank you. Someone said it's clear. So very. So subscriptions received, including 5,000 for next year. Whether it's for next year रहने दो or last year का रहने दो, subscription received entire amount will be shown on the receipt side. We will not do anything. Subscription outstanding for last year. Outstanding बोले तो ये नहीं आएगा because it is not received. It will not come in the receipt side. Outstanding. Furniture purchased, payment side में आएगा. Interest received on investments received, it comes on the receipt side. Books purchased will come on the payment side. Rent paid, it will come on the payment. अभी देखो rent due बोल रहा है. Rent due का मतलब हमने pay नहीं किया, अभी due है, मतलब pay करना है. तो ये receipt and payment में नहीं है. Anything due, anything receivable, anything payable नहीं आएगा.
only receipt and payment आएगा. So entrance fee we have received 2,700 will come on the receipt side. Salaries paid will come on the payment side. Outstanding salaries again. Outstanding salaries मतलब हमने और नहीं पे किया, पे करना है तो वो नहीं आएगा. Cash in hand is there, so by balance carried down. So this will come like this. So this is all cash in hand दिया था, the balancing figure cash in. So देखो two balance brought down, cash in hand इतना है, cash at bank ले लो. Subscription received including 5,000 for last year. Entire thing will come. Interest on investments receipt में आएगा, entrance fees receipt में आएगा. Then investment purchase will come on the payment side, furniture purchase payment side, books purchase payment side, rent paid payment side, salaries paid, carried down हो जाएगा, brought down. This is how it will come under receipts and payments. Now all of you please see the difference between receipts and payments account and income and expenditure. This is a broad what we call to say differences. Up ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो टाइप ऑफ द अकाउंट मींस रियल अकाउंट बोलकर आप लोग सोचे हुए रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज अ रियल अकाउंट. तो इधर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में वही रूल अप्लाई होता. डेबिट व्हाट कम्स इन पेमेंट्स, रिसिप्ट साइड में जो आ रहा इट इज डेबिटेड, पेमेंट साइड में जो आ रहा वो क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज रियल अकाउंट. Income and expenditure is of a nominal nature. Debit all expenses and losses and credit all incomes. So debit side में expenses आएगा और expenses, and credit side में incomes आएंगे. So receipts are shown on the debit side and payments on the credit side. This debit and credit side. Either incomes are shown on the credit side and expenditure on the debit side. I told you already. Basic structure cash, it is a summary of cash and bank transactions total. इसका क्या रहता स्ट्रक्चर, इट इज समरी ऑफ इनकम अर्न एंड एक्सपेंडिचर incurred during the year. Whatever you have earned and in the year, received and receivable, paid and payable जो भी आएंगे in the income and expenditure for the year. खर्चा इधर क्या जो रिसीव करे और जो पे करे चाहेगा, रिसीव करने का और नहीं आने का आउटस्टैंडिंग सब नहीं आएगा. इधर फॉर द ईयर जो भी रिसीव्ड हुआ और आउटस्टैंडिंग भी लेंगे, पे करें और आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे. दिस इज फॉर द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये इसके बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता. एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा. एंड इट ऑलवेज एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस शोज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज शोज आइदर सरप्लस और डेफिसिट. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट हम करेंगे तो एंड का रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट. ये नॉन ट्रेडिंग में सरप्लस और डेफिसिट बोलेंगे और ट्रेडिंग कंसर्न में हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस. इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट ए समरी ऑफ कैश. इसका ऑब्जेक्ट क्या, व्हाट इज द ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर, कैश ट्रांजैक्शन, पैसा आया पैसा गया विल बी रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट. इसका क्या होता है, द नेट रिजल्ट्स ऑफ द रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फॉर ईयर. व्हाट इज योर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, मीन वेदर यू मेड ए प्रॉफिट और लॉस, मीन सरप्लस या डेफिसिट. इसका मतलब इसमें क्या होता है, कंटेंट्स क्या रिकॉर्ड करेंगे हम बोले ना, पैसा आया पैसा जाए, किसके लिए आया किसके लिए गया, whether it is a capital nature or revenue nature, जो भी है it will be recorded. इसमें only revenue, very very important difference है. इसमें receipts and payments में हम revenue भी record करेंगे, capital भी record करेंगे. पैसा किसके लिए आ रहा किसके लिए जा रहा मतलब ही नहीं, पैसा आ रहा पैसा जा रहा. रेवेन्यू के लेन देन दो, कैपिटल के ले लें. बट इधर खाली रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही लेंगे, कैपिटल इनकम्स और कैपिटल एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे. एडजस्टमेंट्स, नो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इधर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे करंट ईयर के लिए. करंट ईयर का जो भी है ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग. अगर ये इनकम में अगर हम रिसीव करें किसी लास्ट ईयर का है कुछ नेक्स्ट ईयर का है तो उसको हटा देंगे. वी डिडक्ट द लास्ट ईयर, वी डिडक्ट द नेक्स्ट ईयर एंड ओनली द करंट ईयर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ही लेंगे. जो भी लास्ट ईयर का हो जो भी नेक्स्ट ईयर का हो उसको हटा देंगे, वी माइनस इट. accrued item, it does not include accrued items or accrued incomes, it includes all accrued incomes. जो भी current year का accrued है income या तो expenditure, we record it for the current. So this is the basic difference आप लोग समझ में आना. This is very very important. When I share it, this PPT आपको आप पढ़ लीजिए, ये important है. अभी देखो आपको मैं ये बोर्ड पे मैं ट्राई करता. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. तो विल जस्ट ट्राई. आपको दिख रहा होगा
ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। दिखाई दे रहा आप लोगों को? Please let me know, all of you. Are you able to see? No. पता नहीं फिर। अभी दिख रहा है क्या? ठीक है, ट्राई टू। ओके, तो देखो, हाँ ठीक है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश एंड कैश है। You are able to see the slide, isn't it? The question. Huh? Okay, there you are able to see, good. So I just tell थोड़ा idea आएगा. This is our income and expenditure account हम करेंगे. Income and expenditure account for the year. ठीक है, ये रहने दो. हम पढ़ा रहे हैं, आप सुनना ही दे रहा. ठीक है. So two balance brought on, opening cash इसमें नहीं आएगा. Two subscriptions होगा. We take it here as by subscriptions. By subscriptions हम लिखेंगे इधर. By subscriptions आएगा 35,000. By subscriptions 35,000. Two entrance fees. उसके बाद हमने inner column में लिखा उसको because there are some adjustments are there. Two subscriptions will take, all the two will come on the buy side. Two means receipt will become income, payment will become expenditure. फिर two entrance fees है. तो entrance fees का कुछ बोला क्या? देखो एडजस्टमेंट में बोला कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस बोला. तो हमने क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस 5,000 में विल जस्ट टेक हियर बाय एंट्रेंस फीस. बाय एंट्रेंस फीस हम बोलेंगे 2,500 लेंगे. Sorry, I went for the pen. Anyway, two entrance fees, उसको by entrance fees 2,500 लिखते हैं. Because he said 50% of the entrance fees has to be capitalized. तो 50% ही इधर लेंगे. देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया. Two sundry receipts will take is that what? By sundry receipt. ये कुछ भी होगा. Sundry receipts. Two sundry receipts by sundry receipts होगा 5,000. Again, I will show in the screen also, on the slide also I have done. तो आपको दिखने, आपको समझ में आएगा कि कैसा करना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑल द रिसीव्स का टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स करेंगे. दिस आर ऑल रेवेन्यू ओल्ड न्यूज़पेपर्स. टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 500. तो इधर होगा, दिस इज हाउ इट कम. सो टू का सो बाय में आएगा. अभी बाय लैंड है, बाय लैंड विल नॉट कम ऑन द डेबिट साइड, अभी ऑन द एक्सपेंडिचर साइड टू लैंड नहीं आएगा. बिकॉज लैंड इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. लैंड हम डेली नहीं खरीदते, वंस इन ए लाइफ टाइम, इट इज एन एसेट. तो बाय लैंड विल नॉट कम ऑन द डेबिट साइड, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. बाय बिल्डिंग्स बोल तो टू बिल्डिंग्स भी नहीं आएगा. बिल्डिंग्स इज एन एसेट, तो नो एसेट विल कम, ओनली एक्सपेंडिचर साइड. बाय लैंड will not come, buy buildings will not come, buy furniture will not come. Sports material कितना है देखो, वो भी asset है. Depreciate बोला sports material adjustment में. Sports material की it's not a daily, some equipment is there, some main material is there, it is a depreciable asset. तो उसको क्या होगा, will not take it on the expenditure side. Okay, I'll zoom the camera 1 minute. Just 1 minute, I'll zoom the camera also. Then
Thank you. It's okay. Sis. I'll try. I will try to do as much as possible. So buy land will not come through land. Then buy buildings will not come. Buy sports material I would have taken had it been of revenue nature. But इसे adjustment में बोला depreciate sports material. मतलब it is an asset. उसको नहीं लेंगे. So buy sports material will not come to. Buy general expenses will come as 2 general expenses. This is by general expenses will come as 2 general expenses, 8,000. Like this. Then buy magazines. Magazines we regularly buy purchase. Buy magazines, we like 2 magazines. It is also expenditure. Buy magazines, 2 magazines, 500 rupees. होगा उसके बाद buy balance carried on. Buy balance carried on is a closing cash in hand. It will not come in the income side. Okay. अभी एडजस्टमेंट में बोला कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस वो 50% ले लिए सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 5,000 मींस और सब्सक्रिप्शंस आने का है ये ईयर के लिए फॉर द करंट ईयर एनीथिंग फॉर द करंट ईयर हम क्या करेंगे ये क्या एनीथिंग फॉर द करंट ईयर ऐड कर देंगे फॉर द ईयर फॉर दिस ईयर आने का आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000 एनीथिंग फॉर द करंट ईयर हम ऐड करेंगे ये होगा 40,000 होगा अभी दिख रहा होगा आपको जूम के तो आपको ये समझ में आएगा ना तो सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग हमने कर दिया 5,000 और डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स मटेरियल बोला स्पोर्ट्स मटेरियल आपका 5,000 है उसका 10% बोले तो 5,000 का 10% होगा 500 इधर देखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना होगा स्पोर्ट्स मटेरियल आपका 5,000 का 10% 500 तो ऐसा आएगा आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड ओके आई एम डूइंग इट आई विल डू दैट विद द इंक पेन अभी नया पेन लिया तो अभी क्या करेंगे हम ये 40,000 इधर है अभी इसका टोटल लेके इसका टोटल आपका अगर इनकम ज्यादा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से हम बोलेंगे टू सरप्लस बोलेंगे इसको बोलेंगे टू सरप्लस ये 40,000 प्लस 5 45 47 48,000 इधर आ रहा है 48,000 माइनस 9,000 विल बी 39,000 होगा आपका सरप्लस देखते हैं हेलो सेम नो आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन देखो 2 जनरल एक्सपेंसेस 2 मैगजीन्स आ गया 2 डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस मैं जो सॉल्यूशन इधर करा आपके लिए दिखाया देखो जस्ट have a glance of the solution फिर और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे टू डू इट
ये हो गया आपका। अभी और एक देखो, ये प्रॉब्लम में क्या हुआ, जीवीके क्लब गिव्स यू द रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल रहा है। इसमें क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल नॉट कम इन द इनकम साइड। फिर टू सब्सक्रिप्शंस विल टेक इट एज व्हाट, बाय सब्सक्रिप्शंस। देखते हैं, ओके। When it comes to balance sheet, I'll teach you again. So two subscriptions will come as by subscriptions. Then two donations received for AC. Two donations, it will not come to the income side because a donation receipt is for air conditioner. Air conditioner का मतलब क्या है? It is specific. Okay, I'll take all your accountancy classes. Okay, two subscriptions will come as by subscriptions. Two donations received is not a revenue nature. Donations have been received for specifically air condition के लिए receive करें, तो we will not be able to, we should not take it to the income side because that donation received is only for AC. So the company, the club is liable. The club वो पैसा donations उसके लिए, Rupesh Ranjan raised the hand, but I will, you keep your doubt ready, Rupesh. I will explain you. Don't worry. What all your doubts are there, please keep it. I will close the session slightly early, then we'll discuss more and I'll clear your doubts. Okay, no issues. Then two subscriptions will say by subscriptions or anything. Two donations received for AC. It will not come to the income side donations. I will just show you. Yeah, two donations will not come here on the income side because it is of specific nature. तो ये नहीं आएगा. It will come to the balance sheet because ये donations हम receive करें AC के लिए और वो donation AC के लिए use करना है. So we are liable to use that for only donation. Two interest on investments will take it to the income side by interest on investments. Two sale of old furniture. देखो old furniture हमने बेचा. Adjustment में देखो आपको क्या दिया. Old value of old furniture sold is 45,000. तो आपने 45,000 वैल्यू का आप 42,000 को बेच दिए, तो हमारे को लॉस हुआ, गेन हुआ. देयर इज अ लॉस ऑफ 3,000. ओनली लॉस और इनकम विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से. 45,000 का आपने 42,000 को बेच दिया, तो 3,000 का लॉस हुआ. दैट लॉस विल कम इन द एक्सपेंडिचर साइड. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 आएगा. like this it will come. Two loss on sale of furniture 45 minus 42. 45,000 का आपने 42 को बेच दिया, तो 3,000 आपको लॉस आएगा. ओके, गुड. ये होगा. Then buy salaries will come as expenditure side as two salaries. Then buy general expenses will come as two general expenses. Buy furniture, again furniture is not a expenditure, it's a capital expenditure. So buy furniture will not come as two furniture, it is an asset. Okay, तो ये याद रखो. Then buy purchase of shares will not come here, to purchase of shares, because shares are also assets. We will not buy shares are not an expenditure, so it will not come to. The buy stationery will come as to stationery. Then buy balance carried on is a closing cash, will take it to the asset side in the balance sheet. Okay, अभी देखो outstanding subscriptions 31st आने का है, तो ये subscriptions हम क्या करेंगे, टू सब्सक्रिप्शंस का बाय सब्सक्रिप्शन लिख के इनर कॉलम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 5,000 हम ऐड करेंगे. 90,000 को 5,000 ऐड करके 95,000 हो जाएगा. फिर उसमें क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31, और इसमें भी 500 एडवांस है एज ऑन दिस डेट. तो एडवांस का क्या करेंगे हम, माइनस कर देके विल शो इट इन द लायबिलिटी साइड. व्हेन आई डू द बैलेंस शीट आई विल शो यू दैट. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो नेक्स्ट ईयर का हम ये ईयर आ गया तो माइनस कर देंगे, आने का है ये ईयर का ऐड करेंगे, करंट ईयर का ऐड कर. ये याद रखो, करंट ईयर का कभी भी ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का भी लेस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर का भी लेस कर देंगे. वी ऑलवेज माइनस लास्ट ईयर्स, add current years and minus the next year. Only we take in the income and expenditure only for the current year, whereas the receipts and payments account will take for any year. So that is what, and value of old furniture. So these problems, this is the receipts and payments account given. Of this we have done income and expenditure like this. See. So buy subscriptions will say add outstanding for the current year. Sorry, add outstanding should become, I've done wrong. Instead of adding, I said 1 minute. Adding, it should become 95,000. Received in advance, it should be 90.
4. Okay. 94 plus 10. This will become 1,04,000. Okay. Done. 1,04,000 ये भी होगा 1,04,000 1,04,700. So this will be, I think, 55,700. 7, 6, 3, 9, 10, 14, 1 carry, 5 right. Yes, correct. So your surplus will be like this. Add current year's outstanding hoga and okay. Add outstanding. So this will be your income and expenditure hoga. Done. So this receipts and payments will be like this, and income and expenditure account will be like this. Good. I hope you all have understood this. Any doubt reto, you just make a note. I'll come back to you. So two balance drawdown will never come. A naya aayega, two subscription will come by subscription. Donations received for AC will not come because it is a specific donation. No specific donations will come. Two interest on investments will take it as by interest. Two sale of old furniture. आपने 42,000 को बेच दिया, उसका book value 40, 45 का 42 को बेचने से 3,000 loss हो गया. Only loss or income will be taken to the income and expenditure side. Then by salaries will come as two salaries. By general expenses will come as two general expenses. Yeah. So please, this question is about furniture point. Okay. Okay. I will suggest the book also and about furniture. देखो भाई furniture का value कितना है? Adjustment में बोला value of old furniture sold is 40. The value of the furniture तुमने 45,000 value का आपने 42,000 को बेच दिया. तो आपको लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो लॉस हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में लेंगे. लाइक दिस विल टेक इट. देखो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 45,000 का हम देंगे, 45 का 42 को बेच दिए, सो देयर इज अ लॉस. ये ऐसा देंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली प्रॉफिट और लॉस आएगा, विल नॉट टेक द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वैसा. सो दैट इज अ पॉइंट. कोई पूछ और क्या है? ओके, जान ठीक. बुक कीपिंग के लिए एक अच्छा बुक होगा बाय जैन एंड नारायण. हम ये देखो, समवन आस्किंग बाय SP जैन एंड नारायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दो भी है. I'm just sending it. SP Jain. I wrote it. I hope you all have got it. SP Jain and Naran part 1 and part 2. दो भी है, दो भी ले सकते हैं. देखो, any doubt is there, you please ask me again. ये होगा ये receipts and payments का. So income and expenditure we have to do from the receipts and payments. Receipts and payments में income and expenditure. Rupesh Ranjan, any doubt is there? Please write in the chat box. I'll answer your question. Okay. अभी देखो, from the following information prepare income and expenditure account बोल रहा है. Okay. So subscription received 1,14,000. सब्सक्रिप्शन रिसीट 1,14,000 में हम क्या करेंगे? इंक्लूडिंग लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. Yes, SP Jain and Narang book name only. It's the author's name. The author name is Acha. This is, I'll tell you, financial accounting. Sorry, financial accounting. The name of the book is Financial Accounting. Huh? Yes, Financial Accounting. It is Financial Accounting by SP Jain and
Narang. Part 1 and 2 books you have to buy, part 2. Okay, financial accounting by SP Jain. Sir, I can't get it. Why it's not coming in the chat box? Just see. Okay, financial accounting by SP Jain and Narang, part 1 and part 2. 2 books are there. Dekho, Neta, I will explain you afterwards. I will tell you. You should have come in the chat box. Okay. The subscription received देखो 1,14,000 में. So it's not showing in the chat box. Why it is not showing in the chat box? I said to Sitara, to everyone. Okay, I'm just sending. We'll see. No. Financial accounting by SP Jain and Narang. Part 1 and part 2. Now just see. Abhi have sent. Still not coming. I said to everyone I'm sending, no? Everyone in the meeting. One minute, I'll try once. Okay, in the PPT itself, I'll write 1 minute. Now just see whether it has come. Okay, now it has come. Good. So subscription received 1,14,000, including last year, he said. When he says last year, yes, now it everyone. Okay, I will take. Thank you so much. I'll suggest, okay. I will do that. Don't worry, I'll explain. So outstanding subscriptions will come. So subscription is 1,14,000, including last year, he said. Because he said including last year, हम उसको minus कर देना. I'll show you how to do it also. Then salaries including last year's salaries 19,200. Out of this, he said, this outstanding salaries we should not take it. In the income and expenditure side, in the receipt side, outstanding subscription, he says
from the following receipt, we should add it to the income side. ये 1,14,000 में last year का 14,000 minus करना, then outstanding subscription add कर देना. Okay. Okay, I will suggest once the class is there, you ask me all your doubts, I'll clear. Salaries including last year salaries is out of 19,200 salaries, including last year बोल तो last year का क्या करना? Income and expenditure में minus कर देना. Outstanding salaries का मतलब we have to add it. This is very very important. Subscription receipt में income side में by subscriptions लिखो, including last year का बोल तो minus कर दो. Outstanding मतलब add कर देना, उसको add करना आने का. Salaries including last year बोल रहा, salaries by salaries करके लिख के payment receipts payment expenditure side में 2 salaries लिख के less for last year 2,000 point. Outstanding salaries क्या करना? Add कर देना because you have to still pay. ये important. Two sundry expenses will come as by sundry, 2 sundry expenses. Tournament expenditure will come as 2 tournament expenditure. Meeting expenditure will come as 2 meeting expenditure. Traveling expense will come as 2 traveling. Books purchased will not come. Books is an asset. ये नहीं आएगा. I'll show you. Newspapers will come 2 newspapers. Rent will come as 2 rent. Postage and telephone it will come as 2 postage and telephone. ये debit में होगा. Printing and stationery expenditure. Donation 6,000. ये बड़ा donation है, small donation we do not know. We have to write a note. I'll show you how to take. Sale of old newspapers will come in the income side. Thank you. Thank you. I will teach you. Now this is how it comes. So this is how on the what I have done is this. 2 salaries I said last year का क्या करना minus करना current year का add कर देना हुआ. 2 sundry expenses, 2 tournament expenses, 2 meeting, 2 traveling, 2 newspaper, 2 rent, 2 postage, all expenses I have taken here. And subscription में add outstanding करे last year का minus कर दिया. We have taken here. Donations we have taken. Sale of news. Donations. See the note what I gave you. Purchase of books is a capital expenditure and hence not considered. Books हम खरीदेंगे आज खरीद के कल फेंक देंगे क्या नहीं. Books are assets. So books is not a revenue expenditure. So books is a capital expenditure. So I have not taken on the expenditure side. Small amount of donation. Donation हम क्या करें out of 1,40,000 after total receive income में कल 6,000 is a small amount. So 6,000 anything less than 10% आप याद रख लो in the mind. 10 to 20% के बीच में अगर receipt करे तो you take consider as a small donation and take to the income side. Thank you. So purchase of books, capital expenditure is taken. So this is a note I made it for you to understand. So salaries आएगा last year का outstanding, Sunday expenses, tournament expenses, all the expenses will come. Important point इसमें क्या है? Salaries में last year का है तो minus कर दो, current year का है तो add करना. Subscription outstanding current year का last year का minus कर. Good. I will take your classes, not issue. Okay, we'll see. तो ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा. I will come back to it. Good. So one more problem I have done. देखो अभी इसमें क्या करें? 2 balance brought down. तो opening cash in hand ये नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो just see how I am doing it. We'll try to understand. इसमें important point हम try करते हैं. इसमें देखो अभी 2 balance brought down, opening cash नहीं आएगा. 2 donations 35,000 है. Is 35,000 is a small amount or a big amount? It is a big amount. I will not take as by donations. देखो अभी इसमें 2 membership fees तो हम लेंगे इसमें by membership fees करके. You understand this? Like, sorry, 2 membership fees by membership fees is the 1,200 rupees हम income में लेंगे. अभी देखो entrance fees 1,500. Entrance fees का कुछ बोला क्या? And in this problem very clearly said
टू डोनेशंस दिया 35, कैपिटलाइज द डोनेशंस बोला, देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट, तो उन्हें बोल रहा भी, अगर वो नहीं बोला तो भी बिकॉज आउट ऑफ 55,000 रिसिप्ट में 35,000 इज अ बिग अमाउंट, विल नॉट टेक इट टू द इनकम साइड, यू रिमेंबर दैट। अगर स्मॉल रहे तो ले लेंगे। डोनेशन 35 वेरी क्लियरली से कैपिटलाइज करो बोला तो हम इधर नहीं लेंगे। मेंबरशिप फीस ले लिए, फिर एंट्रेंस फीस 1500, एंट्रेंस फीस का कुछ एडजस्टमेंट दिया था, सॉरी, एंट्रेंस फीस 1500, सो यू राइट हियर by entrance fees, it's a we consider as a regular income 1500. Okay, next then to enter two subscription, देखो we are doing for so 14 and 15, he has given for 13 14 14 15 15 16, so we will take it here by subscriptions only for the current year को होगा 7,500 rupees. This is very important part. अभी ये प्रॉब्लम में आपको दिया 13 14 का दिया, 14 15 का दिया, 15 से we are doing for the year ended 31st March 15, means we are doing 14 and 15, तो हम करंट ईयर का लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लास्ट ईयर का नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं। अभी सेल ऑफ फर्नीचर देखो, the other day you asked me in the earlier sale of furniture क्या बोला, furniture value is 2000 but it is sold for how much, 1650, 2000 का हमने 1650 को बेच दिया, तो मतलब क्या है 2000 का 1650 को बेच दिया तो देयर इज अ लॉस ऑफ 350 रुपीस लॉस है, तो ओनली लॉसेस और इनकम विल कम, तो हम इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हाउ मच 350, एंड जस्ट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000 में 1650 है तो ओनली 350 इज अ लॉस, ओनली लॉस विल कम, नथिंग विल कम। To interest on investments, to interest on investments will come as what, by interest on investments, by interest on investments कितना होगा 800 rupees आ, okay, someone else has got a doubt, just check it. टेन to 20% of your total receipt, अगर तुम्हारा डोनेशन है 55,000 your receipts are there, उसका 10% होगा 5,500, 20% होगा 11,000, ये 25,000 या 10,000 से कम रहे तो you consider as small donation and take it. If it is more than that, you consider as a big donation and write a note. But in this problem उन्हें क्या दिया, capitalize the donation बोला, तो no thinking, will not take it to the income side, वो capitalize करो तो balance sheet में आ जाएगा. Please remember that point. Just I am giving you a hint. There are two types of donation: specific donations and general. Specific donation, donation for building, donation for AC, donation for furniture बोलते, it will not come to the income side. अगर donations है, कुछ भी नहीं बोला वो, उन्हें he has not given anything, small donation or big. What is small, what is big, you decide it. तो आपके लिए एक आइडिया के लिए मैं क्या बोला, टोटल रिसिप्ट्स का एक 10% लगा लो, 5,500 या तो 20%. Up to 10,000 rupees you consider as a small, more than that you consider as a big donation. So that is what is my explanation for small or big. Okay, chalo, is it clear? Good. Then buy furniture will not come on the expenditure side because it's not a revenue expenditure. Buy furniture is an asset. So buy rent and taxes हम क्या करेंगे, 2 rent and taxes ले लेंगे. By rent and taxes, 2 rent and taxes. We take it here. By rent and taxes, I'm not writing full, I'm just telling. By salaries will come as, अच्छा, by rent and taxes लेंगे कितना है 5,300 in the inner column I'm writing because there's an adjustment for rent. Okay. By salaries will come as what? Expenditure side, 2 salaries. Then by printing will come as 2 printing. By scholarship payments, 2 scholarship payments. By newspapers, 2 newspapers. By government bond. Government bonds is not an expenditure. By government bonds, both it will not come. It is an asset. We are buying. It's not bond. Sorry, printing mistake. By government bonds. Bonds are all debentures. It's a on that we get interest. So it will not come to the expenditure side. It is an asset. Like buy books purchase. Books is also an asset. It will not come on the expenditure manner. वो assets है ना, वो नहीं आएंगे. अभी outstanding subscriptions for the year बोल रहा 14. Outstanding क्या करेंगे अभी पर? Current year का जो भी है add outstanding करेंगे 2,500 like this. उसमें receipts and payments में क्या दिया, subscriptions last year का दिया, current year का दिया, next year का, हम खाली current year का लेंगे, we'll take only for current year, और यदि ये year का कुछ outstanding है तो हम जोड़ेंगे उसको,
यदि अगर नेक्स्ट ईयर का और लास्ट ईयर का रेट हो उसमें से घटा देंगे, निकाल देना, लास्ट ईयर का निकालना, नेक्स्ट ईयर का घटेगा और करंट ईयर को जोड़ेगा। बस ये एक याद रखना कि जो भी है ये किसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द करंट ईयर का जो भी है वो जुड़ेगा इसमें। अब प्रीपेड रेंट बोलता है, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है, ये ईयर का रेंट में थोड़ा नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पे कर दिया। प्रीपेड रेंट क्या करेंगे, लेस प्रीपेड करेंगे, रेंट जो भी करे लेस प्रीपेड, प्रीपेड में तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिए 1300 हम इसमें निकाल देंगे, कटेगा तो आएगा आपको 4000 रहेगा पैसा। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बोला, जो भी स्टेशनरी बिल है वो स्टेशनरी बिल को क्या करेंगे, टू स्टेशनरी लिख के उसको ऐड आउटस्टैंडिंग करें, करंट ईयर का जुड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का और लास्ट ईयर का घटेगा, ये याद रखना। अभी देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10,000 और इंटरेस्ट रेट 10%। अपना इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 10,000 है, 10,000 का हमने एवरी ईयर कितना परसेंटेज आना है, 10% आना है, तो कितना आने का है, 10,000 का 10% कितना है, 1,000 रुपीज। तो इधर आएगा आपको ये एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 800 लिखना है, 800 लिख के हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे। देखो आपको आउटस्टैंडिंग में आ रहा है ना, so this is what out, so outstanding stationery is what 300, तो हम क्या करेंगे यार, आउटस्टैंडिंग 300 इसको जोड़ देंगे, जो भी स्टेशनरी है, स्टेशनरी कितना है 2200 और 2500, so this is outstanding cost of investment। इन्वेस्टमेंट्स का आपको समझ में आना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉब्लम में दिया 800, एडजस्टमेंट में बोलता है इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपने इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10%, तो 10,000 का 10% कितना आना है 1,000 रुपीज आ रहा है, बट आया कितना अपने को 800, तो दैट मींस इट इज ए हिडन एडजस्टमेंट, अपने को मालूम है फॉर द ईयर वी शुड गेट 1,000 रुपीज, अपने खाली 800 आया तो हम क्या करेंगे उसको 200 जोड़ देंगे, so that will become 1,000, so this is how we have to understand, so it's a hidden adjustment, cost of investment 10,000 दिया, उसका 10% का हिसाब से 1,000 रुपीज आना है, तो अपने 1,000 का 800 आ गया, 200 और आने का, so this is all the same problem, see here now you'll understand what I have done here, देखो to rent and taxes 5,300, prepaid क्या करा 1,300 निकाल के 4,000, salaries लिख दिए, printing and station 2,200 plus 300 2,500 हम दिखा, scholarships ले लेना, न्यूज़पेपर है, लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर हम 350 दिखाएंगे, जोड़ दिए, तो कैसा है 2,000 का वी सोल्ड इट फॉर 1,650, तो लॉस हो गया, सब्सक्रिप्शन का देखो 7,500 हम जोड़ दिए 2,500 लाइक दैट, मेंबरशिप फीस 1,200, फिर सब्सक्रिप्शन और फीस है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट देखो 800 प्लस 200 1,000 रुपीज, तो अगर इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से हम इधर क्या करेंगे, we minus it and take it as what deficit, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से डेफिसिट होगा, अगर इनकम ज्यादा होने से सरप्लस होगी। सब्सक्रिप्शन, ओके, सब्सक्रिप्शन का देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट में क्या 7,500, आई विल कम बैक अगेन, subscriptions ka he has given what he told you 2013 14 14 15, we are doing for 14 15, तो 14 15 का 7,500 ही लेना है, 13 14 का नहीं लेना, फिर the receipts and payments में हर एक ईयर का लेंगे, किसके लिए I told you any receipt any payment will come for any year, but in the income and expenditure we take only for the current year, we are doing for the year what 2014
1415, तो 1415 का 7500 लेंगे और एडजस्टमेंट में क्या बोलता है 1415 का आउटस्टैंडिंग कितना 2500, so 2500 is outstanding, we'll take 10,000 like that. This is about the subscription. Someone had doubt. I hope I'm clear. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना और करंट ईयर का ऐड कर एनीथिंग ऑफ लास्ट ईयर, वो इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में लास्ट ईयर का है नेक्स्ट ईयर वो नहीं लेंगे खाली, बिकॉज सेपरेटली दिया हुआ। अगर ये 7500 में इंक्लूड होता तो हम माइनस करेंगे, बट 13-14 का अलग दिया, 14-15 का अलग दिया, फिर तो हम खाली 14-15 का जोड़ लेंगे और एडजस्टमेंट में बोला 14 and 15 का आने का है 2500, सो वी टेक 2500 14-15 का ले लेंगे। सो दैट इज हाउ वी विल कनेक्ट। Okay. I will do it. I will consider. So this is how I will take actually journal ledger. हम थोड़ा adjust करेंगे आपको. We'll see what best you can do. So we have to consider ऐसा करंट ईयर का लेना मतलब 7500 इस करंट ईयर का, फिर ऐड करेंगे जोड़ देंगे 2500. So this is how the receipts and payments account is given. You have to prepare the income and expenditure account. About donation. So two donations is someone asked about donation. Two donations I have not taken by donations. There are two reasons I have not taken. One reason very clearly a problem है क्या बोला, capitalize the donation. आप देखो adjustment में other information 5th point बोला capitalize करके बोला तो it will not come. देखो और एक important point, all your receipt side में जो भी है वो income में आएगा, इधर जो receipt में वो income में आएगा, तो two donations will come by donation, but by donations हम नहीं ले रहे, क्यों बोलते? There are two reasons. One, कैपिटलाइज डोनेशन बोला, बिकॉज कैपिटलाइज बोलते इधर नहीं आएगा। एक पॉइंट, अगर 35,000 देखो 55,000 योर टोटल रिसीट में 35,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, इज ऑलमोस्ट 70% है 60%, तो इट इज अ बिग डोनेशन, वो नहीं आएगा इधर, ये याद रखो। स्मॉल या बिग इधर तो कैपिटलाइज करो बोलता, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन ही नहीं, ये नहीं आएगा। नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, अगर 10-20% में बोला ना, ये करके यू हैव टू डिसाइड इट, इट्स नॉट ए बिग थिंग, जस्ट राइट ए नोट। Entrance fees is a revenue nature. कोई पूछा entrance fees is a revenue nature and investments का। देखो two entrance fees 1500, entrance fees जो है like it is considered as a guest fees जो regular, कुछ भी problem है, I already told you, if nothing is mentioned in the problem, entrance fees is considered as a regular income, take it as a regular income. अगर entrance fees to be capitalized बोलो तो लेना, अगर कुछ नहीं बोलते you take it as income। अभी और एक कोई पूछ रहा था about interest on investment। देखो इन्वेस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट में फोर्थ एडजस्टमेंट में वो बता रहा कि हम लोग ने द क्लब हैज इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज। हम किधर भी अगर बैंक में आप 10,000 इन्वेस्ट करें तो आपको 10% इंटरेस्ट आता है एवरी ईयर। सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब इट इज पर एनम। सो 10,000 के ऊपर 10% कितना आना चाहिए इंटरेस्ट? 1,000 रुपीज आना है। लेकिन वी हैव रिसीव्ड हाउ मच, हमने कितना रिसीव करा है? टू इंटरेस्ट ऑन रिसीव कितना करा? 800 ही कर लिया ना, तो वी हैव रिसीव्ड ओनली 800, लेकिन हमारे को फर्दर ईयर यहाँ ना कितना है? 1,000 रुपीज आना है। तो 200 इज ए इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। आपको समझ में आना है कि एवरी ईयर द इनकम इज 1,000 रुपीज, हम दिए 800, तो 200 और आने का है, ऐड करना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। Shall we go to the, देखो मैं इसमें लिखा, देखो परचेज ऑफ furniture, government bonds or capital expenditure, these are to be recorded in the balance sheet as assets में लिखा। current year 2014-15 subsidy has to be treated as a revenue income। loss on sale of furniture, देखो book value of the furniture sold is 2,000 and less the sale value 1,650, वो भी लिखा। loss on sale of furniture is a revenue expenditure, it is any loss or gain is a revenue expenditure, should be shown on the income or expenditure side। loss है तो expenditure side, income आए तो what is the difference between membership fees and a life membership? membership fees क्या करते हैं? membership fees every month or every year लेते हैं। membership regular रहता है, every month membership fees पे। if you are a member of a club, you have to pay monthly or yearly or quarterly, that is a regular income हो जाता।
लाइफ मेंबरशिप का फीस क्या होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम हम लेंगे, तो वंस ही पेस ए लाइफ मेंबरशिप फीस, वो फिर नहीं पे करेगा कुछ भी। तो हम द क्लब हैज टू गिव सर्विस टू हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। तो हम क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप वी पुट इट ऑन द लायबिलिटी साइड एंड वी आर लायबल टू डू सर्विस फॉर हिम, तो थोड़ा थोड़ा उसको राइट ऑफ कर देते। तो लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मेंबरशिप फीस इज ए revenue expenditure, revenue income. Membership fees is revenue and life is a capital. Okay, done. Right. You're clear about it. I'm happy. So life membership is once in a lifetime. It will be on the liability side. रखे slowly उसको write off करेंगे. But membership is a regular income. So this is how we'll take. I hope we can come to question answer session. Actually, I wanted to do balance sheet also, but this pro forma of a balance sheet will be like this: income received in advance. When I do the problem, I'll explain you much better. Photo. Is it clear? Someone else? I will send the all these questions to you. No, we'll share the PPT with you. Okay. Can we have a question answer session? You want to talk to me? Books is asset. Books is ever. Books is always asset. Any questions still? Opening balance sheet, I will teach you. When capital fund is not given, we have to prepare opening balance sheet to find out the capital fund. When I do the balance sheet, I'll show you how to prepare the opening balance sheet and the income and expenditure and the closing balance sheet. Devashish. Yeah, I will show. We'll have one question answer session, then we'll clear your doubts. Nageshwara Garu? Nageshwara is not there, sir. See, Okay. One Govind Kumar wants to ask some question. Yes, they are all asking now. I will yes. clear their doubts, please. Okay. We'll go for the question answer session. Yes, please. Yes, please ask me. I'm ready. Sir Govind Yes. Kumar, please unmute and answer.
Yes. Pavan is asking, is this chapter is asked in bookkeeping or traffic? It is a bookkeeping chapter. Sir, please provide the above problem based on incarnation and this is sentence. These 10 problems with solution. Okay, I will provide Prashant. Prashant is asking. I will provide the problems with solutions. Yes. Anyone else? This chapter is part of bookkeeping. RB8365 wants to ask some question. Okay. Please unmute and ask question. Yes. Please unmute and ask me questions. Anyone? RB8365. RB8365. I'm getting in chat, sir. Please share the book image because there. I will not be able to shake. I was asking to share the image book. I will share with AFA training, and he will share with you all in the next class. By next class, they wanted image of the book. They are not. There are so many authors are there. I will do that in my next class. Okay, sir. Okay, sir. I will circulate to all the people. Yes, yes, I know. Okay, thank you. I think there are no more questions. We can wind up the session. Some e-audit, some person Huh? has come. He raised the hand. Anyone? There is chat box. They have come. I've answered their chat box, but someone raised the hand. Okay, another two are there. One e-audit somebody has raised. Thank you very much. Sir, एक minute, sir. Excuse me, sir. Sir, actually 2 times payment and receipt हो गया. But sir, actually I request you Yes. adjustment, sir. When actually statement 40 number coming, adjustment. So adjustment when sir in class. क्या बोल रहे? मैं बोल रहा हूँ सर 2 बार पेमेंट एंड रिसिप्ट 2 बार हो चुका है सर, 2 बार क्लासेस. अच्छा, आज का क्लास अच्छा ठीक है, अच्छा रहा, लेकिन एडजस्टमेंट का क्लासेस सर आप कब लेंगे सर? मैं लेता ना अभी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज़ ये 40 नंबर टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स आल्सो आई विल टेक. आई विल टेक बीआरएस. थोड़ा सा आप हम करेंगे. ठीक है सर, मैं से यही बोल रहा हूं. आई विल डू इट. ओके, थैंक यू. ओके, हम करेंगे. Satish, can you please indicate the all top which are in on bookkeeping? Satish, that AFA training will give you the bookkeeping syllabus. They want some bookkeeping syllabus. Okay, sir. We will get that. We'll do that. Yes, sir. Yes, anyone else? Financial accounting book. This is the financial accounting by SP Jain and Jain and Anand. Yeah. Just computer. Sir, I think. Anybody? They are asking. Please send the syllabus that will be sent to you. Right, sir. Very soon. By next class, you'll get the syllabus. But I'll ask them. Okay. This book is available anywhere you'll be available. You know, it's a very what you call to say sought after book. Where any big publishers you'll get it. Not an issue. आज तो मैं भी जस्ट दे दिया सर. Find this book in Hindi version. Hindi version will be difficult.
हेलो 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 भूपेंद्र, वाह भाई, बोल भाई, कहाँ है? अरे कहाँ तो दवा यार। Sir, I think there are no more queries. Shall we wind up, sir? Yeah. Okay. I thank all the participants. I also thank the speaker of the day, Shri G. Kumar, faculty reform. Thank you one and all. Just to remind, the next session will be on accounting reforms. Login timing will be at 14:45 hours on Monday. Session will start at 15 hours. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. It's done. Okay. हेलो, बोलो। विजय है ना? नंबर एक। आप ऑनलाइन कर लो, मैं इधर से चले गया वो। हाँ, देख।